हरे कृष्ण। चैतन्य चरितमृत आदि लीला प्रथम परिच्छेद श्लोक 19। चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 1 टेक्स्ट 19। यही तिनी ठाकुर गौड़िया के करिया छेन आत्मसात, ये तिनेर चरणो बंद तिने मोर नाथ। Here Krishnadas Kaviraj Goswami said, यही तिनी ठाकुर गौड़िया के करिया छेन आत्मसात, यही तिनेर चरण बंद तिने मोर नाथ। These three deity of Vrindavan, like Madan Mohan, Govinda and Gopinath, have observed the heart and soul of Gaudiya Vaishnavas, followers of Lord Chaitanya. I worship their lotus feet, for they are the Lord of my heart. ବୃନ୍ଦାବନର ଏହି ତିନି ବିଗ୍ରହ ମଦନ ମୋହନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ଗୋପୀନାଥ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ତଥା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଗଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଅଧିକାର କରି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି, କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟର ଅଧୀଶ୍ୱର। ପ୍ରପଟ ବାଇ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ। The author of Sri Chaitanya Charitamrita offer his respectful obeisances unto three deities of Vrindavan. Name is Sri Radha Madan Mohan, Sri Radha Govinda and Sri Radha Gopinath ji. These three deities are the life and soul of the Bengali Vaishnavas or Gaudiya Vaishnavas, who have a natural aptitude for residing in Vrindavan. The Gaudiya Vaishnava who follow strictly the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu worship the divine by chanting transcendental sound meant to develop sense of one transcendental relationship with the Supreme Lord. A reciprocation of melo and rasa, of mutual affection, and ultimately the achievement of the desired success in loving service. These three deities are worshipped in three different stages of one's development. The follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu scrupulously follow the principle of approach. एठी कहा जाउछि श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव एवं श्री राधा गोपीनाथ जीव हेउचंती वृंदावन एही तीन विग्रह को श्री चैतन्य चरितामृतर लेखक निजर भक्तिपूत प्रणाम जनाउछंती। एही तीन विग्रह वृंदावन रे बास करिवार स्वाभाविक प्रवृत्ति थिबा गौड़ीय वैष्णव बा बंगीय वैष्णव मानकर जीवन एवं आत्मा स्वरूप अटंती। निष्ठार सह श्री चैतन्य महाप्रभुंकर प्रदर्शित मार्ग अनुसरण करिथिबा गौड़ीय वैष्णवगण दिव्य शब्द कीर्तन करिबा द्वारा भगवत आराधना करंती, जार उद्देश्य परम पुरुष भगवानंकर सहित निजर दिव्य संबंधर विकास घटाइबा एवं परस्पर स्नेहर आदान प्रदान रससिक्त हेबा एवं अवशेष भक्ति जाजनर आकांक्षित सफलता लाभ करिबा। यही तीन गोटी विग्रह को निजर विकासर तीन गोटी भिन्न भिन्न स्तर रे आराधना करा जाए। श्री चैतन्य महाप्रभुंकर अनुगामीगण निष्ठार सह एही धारा रे नीति नियम पालन करंती। Gaudiya Vaishnavas perceive the ultimate object in Vedic hymns composed of 18 transcendental
letters that adore Krishna as Madan Mohan, Govinda, and Gopijana Vallabha. Madan Mohana is he who charms Cupid, the god of love. Govinda is who pleases the senses and the cows. And the Gopijana Vallabha is the transcendental lover of the gopis. Krishna himself is called Madana Mohana, Govinda, Gopijana Vallabha, and countless others names as he plays in his different pastime with his devotee. 18 ଗୋଟି ଦିବ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବୈଦିକ ଶ୍ଲୋକରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଦନ ମୋହନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭ ରୂପେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରେମର ଦେବତା କାମଦେବଙ୍କୁ ଯିଏ ମୋହିତ କରିପାରନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସୁଖୀ କରିପାରନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଏବଂ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମିକ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଦନ ମୋହନ, ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭ ଏବଂ ଏହିପରି ନାନା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥାଏ। The three deities Madana Mohana, Govinda and Gopijana Vallabha have very specific quality. Worship of Madana Mohan is platform of re-establishing our forgotten relationship with the Supreme Personality of Godhead. In the material world, we are presently in utter ignorance of our internal relationship with Supreme Lord. Penag refers to one who cannot move independently by his own strength, and Mandamati is one who lacks intelligence because he is too absorbed in materialistic activities. It is best for such person not to aspire for such infruitive activities or mental speculation, but instead simply to surrender to the Supreme Personality of Godhead. The perfection of life is simply to surrender to Supreme. In the beginning of our spiritual life, we must therefore worship Madana Mohana so that he may attract us any newly our attachment for material sense gratification. The relationship with Madana Mohan is necessary for neophyte devotee. When one wishes to render service to Lord with strong attachment, one worship Govinda on one platform of transcendental service. Govinda is survivor of all pleasure. When by the grace of Krishna and the devotee one reach perfection in devotional service, he can appreciate Krishna as Gopijana Vallabha, the pleasure deity of the beam cells of Braja. एठी ओडियार कहा जाउछि मदन मोहन, गोविंद एवं गोपीजन वल्लभ एई तीन गोटी विग्रहंकर निर्दिष्ट गुण रहिछि। मदन मोहनंकर पूजा हेउछि परम पुरुष भगवानंक सहित थिबा आमर विस्तृत संबंधर पुनः प्रतिष्ठा करिबा। भौतिक जगत रे परम पुरुष भगवानक सह आमर शाश्वत संबंध संपर्क रे संपूर्ण अज्ञानता रहिछि। जे निज शक्ति बल स्वाधीन भाव में विचरण करें नहीं ताकू पांगो कह जाए। जी भौतिक कार्यकलाप अतिमात्रा निमग्न थिबारु अल्प बुद्धि संपन्न हुए ताहाकू मंदमती बोली कह जाए। एहीपरि व्यक्ति पक्षरे सबुठारु भल कथा हेब सकाम कर्मर सफलता लाभ पाए आकांक्षा न करिबा किंबा मनधर्म कल्पना विलास रे मत्त न हेबा
ता परिवर्ते परम पुरुष भगवान के निकट रे केवल आत्मसमर्पण करिबा। परम पुरुष ठारे केवल आत्मसमर्पण ही जीवनर पूर्णता अटे। तेणु आमर आध्यात्मिक जीवन आरंभ रे आमे मदन मोहन को आराधना करिबा आवश्यक। ताहले से हमको आकृष्ट करि पारंती। भौतिक इंद्रिय प्रीति लागी आसक्ति को निराकरण करि पारंती। नवीन भक्त मानक पक्षरे श्री श्री मदन मोहन सहित संबंध स्थापन करिबा अत्यंत आवश्यक अटे। जेतबळे भगवान को सेवा करिवार दृढ़ आसक्ति जात हुए सेतबळे गोविंद को दिव्य सेवा स्तर रे पूजा करा जाए। गोविंद हेउचंती समस्त सुखर भंडार। जेतबळे कृष्णंक कृपा एवं भक्तगण कृपा बल रे केही भक्ति जाजन रे पूर्ण स्तर रे पहुंची पारे सेतबळे से कृष्ण को ब्रजांगना मानकर सुखदायक विग्रह गोपीजन वल्लभ रूपे उपलब्धि करि पारे। चैतन्य लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु explained this mode of devotional service in 3 stages. Therefore these worshipable deities were installed in Vrindavana by different Goswamis. They are very dear to Gaudiya Vaishnava. They are who visit the temple at least once a day. Besides the temple of these 3 deities, many other temples have been established in Sri Vrindavana, such as a temple Sri Radha Damodar of Jiva Goswami, the temple of Shyama Sundara is Shyamananda Goswami, the temple of Gokulananda of Lokanath Goswami, and the temple of Radharamana of Gopala Bhatta Goswami. There are 7 principal temples over 400 years old. There are the most important of 5,000 temples now existing in Vrindavana. एठी कह जाउछि ओडिया अनुवाद रे चैतन्य महाप्रभु भक्ति जीवन जापन यही 3 गोटी स्तर कथा बुझाई कहचंती। तेणु विभिन्न गोस्वामी द्वारा वृंदावन रे यही आराध्य विग्रहंकर प्रतिष्ठा करा जाइछि। सेठारे वास करुथिबा गौड़ीय वैष्णव मानक पक्षरे यही 3 विग्रह अत्यंत प्रिय अटे। सेमाने अत्यंत थरे ए मंदिर को परिदर्शन करती। यही 3 विग्रह मंदिर व्यतीत आउ अनेक मंदिर वृंदावन रे प्रतिष्ठा करा जाइछि, यथा जीव गोस्वामी राधा दामोदर मंदिर, श्यामानंद गोस्वामी राधा श्याम सुंदर मंदिर, लोकनाथ गोस्वामी गोकुलानंद मंदिर एवं गोपाल भट्ट गोस्वामी राधारमण मंदिर। वृंदावन रे वर्तमान थिबा 5000 मंदिर मध्य 400 वर्ष ऊर्ध्व प्राचीन 7 गोटी प्रधान मंदिर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। गौड़ीय indicates the part of India between the southern side of Himalaya mountain and the northern part of Vindhya hills, which is called Aryavarta or the land of the Aryans. The protection of India is divided into 5 part provinces: पंच गौड़ देश, सारस्वत, काश्मीर एंड पंजाब, कान्यकुब्ज उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग द मॉडर्न सिटी ऑफ लखनऊ, मध्य गौड़ मीन्स मध्य प्रदेश नाउ मध्य प्रदेश, मिथिला बिहार एंड द पार्ट ऑफ बेंगल, एंड उत्कल द पार्ट ऑफ बेंगल एंड द होल ऑफ ओडिशा. Bengal is the sometimes called Gauda Desha, partly because it form a protection of Mithila, and partly because the capital of Hindu king Raja Lakshmana Sena was known as Gauda. Its old capital later come to be known as Gaudapura and gradually मायापुर. एठी शिल प्रभुपाद महाराज कहउचंती गौड़ीय कहिले भारतवर्षर सही अंचल को सूचित हुए जहार उत्तर रे हिमालय पर्वत श्रेणी
एवं दक्षिण रे विंध्य पर्वतमाला अवस्थित। यह आर्यवर्त बा आर्य मानकर भूमि कह जाए। भारत वर्षर यही 5 गोटी राज्य बा प्रदेश रे विभक्त यथा सारस्वत, काश्मीर और पंजाब, कान्यकुब्ज आधुनिक लक्षनगरी समेत उत्तर प्रदेश, मध्य गौड़ होउची मध्य प्रदेश, मैथिल बिहार एवं बंगर केतेक अंश एवं उत्कल बंगर केतेक अंश एवं समग्र ओडिशा। बेले बेले बंग को मध्य गौड़ देश बोली कहा जाए। यार आंशिक कारण हेउची जे यह मैथिलेर अंश अटे एवं अन्य एक आंशिक कारण हेउची जे हिंदू राजा लक्ष्मण सेन राजधानी गौड़ नाम रे परिचित थिला। यही पुरातन राजधानी परवर्ती समय गौड़पुर एवं क्रमे मायापुर नाम रे परिचित हेबाकु लागिला। द डिवोटी ऑफ ओडिशा आर कॉल्ड उड़ियास। द डिवोटी ऑफ बेंगल आर कॉल्ड गौड़ियास and the devotee of southern India are known as Dravida devotee. There are 5 provinces in Aryavrata, so the Dakshinastya southern India is also divided into 5 provinces which are called Pancha Dravida. The 4 Vaishnava Acharya, who are the great authorities of the 4 Vaishnava disciplic succession, as well as Sripad Shankaracharya of the Mayavada school, appeared in the Pancha Dravida provinces among the 4 Vaishnava Acharya, who are all aspect by Gaudiya Vaishnava. Sri Ramanujarya, Hare Krishna. Sri Ramanujacharya appeared in the southern part of Andhra Pradesh at Mahabhutapuri. Sri Madhava Acharya appeared at Pajakam near Vamanagiri. In the district of Mangalore, Sri Vishnu Swami appeared at Pandya, and Sri Nimaka Acharya appeared Mungera, Patna in the extreme south. Hare Krishna. एठी ओडिया अनुवाद कह जाउछि ओडिशार भक्त मानकु ओडिया, बंगलार भक्त मानकु गौड़ीय एवं दक्षिण भारतर भक्त मानकु द्राविड़ बोली कह जाए। आर्यवर्त को जेपरी 5टी प्रदेश रे विभक्त करा जाइछि, सेहीपरि दक्षिण भारत बा दाक्षिणात्य को मध्य 5 गोटी प्रदेश रे विभक्त करा जाइछि, जाहाकु पंच द्राविड़ बोली कह जाए। 4 गोटी वैष्णव शिष्य परंपरा महान अधिकारी 4 जन वैष्णव आचार्य एवं मायावाद दर्शन श्रीपाद शंकराचार्यंकर ही पंच द्राविड़ प्रदेश रे आविर्भूत होइतिला। गौड़ीय वैष्णव मानक द्वारा स्वीकृत यही 4 जन वैष्णव आचार्य मध्यरु श्री रामानुचार्य आंध्र प्रदेश दक्षिणांशरे थिबा महाभूतपुरी रे आविर्भूत होइथिले एवं माधवाचार्य मैंगालोर जिलार विमानगिरी निकटवर्ती पाजकमरे आविर्भूत होइथिले एवं श्री विष्णु स्वामी पांड्य ठारे आविर्भूत होइथिले एवं श्री निमाक आचार्य दक्षिणर शेष भागरे मुंगेर पाटना ठारे आविर्भूत होइथिले। Sri Chaitanya Mahaprabhu aspect the chain of disciplic succession of Madhavacharya, but the Vaishnav in his line do not aspect the Tattvavadis. One also claim to belong the Mayavada Sampradaya to distinguish themselves clearly from the Tattvavadi branch of Mayavadas descendants. The Vaishnava of Bengal
performed to call themselves Gaudiya Vaishnava. Sri Madhava Acharya is also known as Gauda Purnananda, and therefore the name of Madhava Gaudiya Sampradaya is quite suitable for disciplic succession of Gaudiya Vaishnava. Our spiritual master Om Vishnupada Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj aspected initiation in Madhava Gaudiya Sampradaya. एठी ओडिया अनुवाद रे कहा जाउछि श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहउचंती श्री चैतन्य महाप्रभु माधव आचार्यंक शिष्य परंपरा द्वारा दीक्षा ग्रहण करथिले, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभुंकर अनुगामी वैष्णवगण तत्ववादी मानकु स्वीकार करंती नाही। जो माने माधव संप्रदाय बोली दाबी करंती माधवंकर वंशधर तत्ववादी साक्षाठारु निजर पार्थक्य स्पष्ट भाव प्रतिपादित करने लगी बंगीय वैष्णवगण को निजर गौड़ीय वैष्णव बोली परिचय देवाक अधिक पसंद करती। श्रील माधवाचार्य परंपरार आसुथिबा वैष्णव मानकु माधव गौड़ीय संप्रदाय बोली नामित करने संपूर्ण युक्तियुक्त अटे। आमार आध्यात्मिक गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज माधव गौड़ीय संप्रदाय दीक्षा ग्रहण करथिले। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।